So see, मैंने तेरे को बताया था ना, like what do you mean by this? This is a downtrend, right? And we have like this is an uptrend, right? So do you think this is automatic? I mean, अगर कोई डाउन ट्रेंड आता है या फिर लॉन्ग अप ट्रेंड आता है, तो every uptrend or downtrend has what? There is candles involved, right? So so we have, so see, in one weekly candle, how many daily candles do we have? We have five, right? Five daily. In one daily, how many candles? How many 1 hour candles? 24, right? In just have a simple logic of this. So every candle has its own purpose, okay, to be honest. Like उसको कैसे ओपन करना है, कैसे क्लोज करना है, और कैसे कौन सी जगह पे हाई बना के कौन सी जगह पे क्लोज करना है. Alright, so the thing is that I want to tell you is, suppose that this downtrend, right, this is the downtrend, or suppose this is the uptrend, right? So suppose ये वाला जो uptrend था, this signifies a candle, alright? This signifies a certain candle. Suppose this is the daily candle, alright? So daily candle का भी अपना एक opening price होता है, right? This is the opening price. This is the opening price of the daily candle. So let's write this as open, right? Every candle has its open price, and every candle has its own closing price as well. Every candle has its opening and closing price. That is very simple, right? And what are the other things that it can have? Yeah, wicks, right? Wicks such as the low and the high, right? So this is what? This is the low and this is the high, right? So if we try to denote this in a particular candle, how would we actually know? It will be something like this, right? This is an uptrend, so this will be a bullish candle, isn't it? Something like this. Yeah, this will be like this, bullish candle, or it will have its own wick, right? Something like this. राइट, ऐसा ही होगा ना बुलिश कैंडल में. सो इसमें क्या हो रहा है कि द प्राइस डज व्हाट, if we have a bullish trend, right? If the price wants to go up higher, right? If the price wants to go up higher, what is the purpose of this candle? It will open up, it will create a low, it will go up higher and close, right? And if we want to continue this trend, right? If you want to continue this trend, what is the another thing that will happen? The price will do what again? फिर हायर हाइज हायर लोज बनाएगा, राइट? और सेकेंड वाली कैंडल को यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट? द मार्केट क्लोजेस एट दिस लेवल, राइट? द लास्ट कैंडल क्लोजेस एट दिस लेवल. So if the price wants to go up higher again, what it will do? It will do something like this, right? It will do something like this. So what is this? This, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, the price opens up at this level, right? This is the opening price. This is the opening price again. The price manipulates, creates a low,
again, if it wants to continue, it will do same as such that the price. So just imagine that this is a daily candle, right? These are daily candles. So what is happening? The price is opening up, creating a low, going up higher, creating a high, and then closing. Same way, the price is closing. This is creating a low, going up higher, creating a high, and then again closing, right? So इसमें क्या हो रहा है अब? Now what are the other things that you can imagine? Now suppose ये वाली candle ये है, देखो, this is the high, right? This is the high, right? So now if we try to denote a bearish candle, how this bearish trend, how would we denote? The price will do what? The price will open up, the price, yeah, the price will open up, create a high, and then close what? Close where? Close below the opening price, right? So suppose इसका opening price ये है, right? This is your opening price. This is the opening price. This is the opening price. It created what? It created another high. It created this high. It created this high. And it closed where? It closed somewhere here. And it also has a low. Right? इसमें क्या समझ में आ रहा है? That the price wants to go lower, or the candle is bearish, isn't it? So now if we try to denote this, if the price, so see, this is what, अब इसको, ये जो bearish candle है उसको denote करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? There will be something like this. There will be a candle like this. It will have its own wick. It will have its own wick. And right, this is the proper representation of what? Of a bearish candle. This is a proper representation of a bearish candle. So if the price wants to continue lower again, what it has to do? It has to open up again, go up, go create a high, and then go up, go down lower, isn't it? And it will be represented by, it will be something like this, right? इतना तो समझ में आ गया ना? It is a very easy concept where everything is what? Fractal. I mean, to be in a way that the price opens up, creates a high, and in order for every candle to do so, it has to do what? It has to create a high and a low, close below. बुलिश एग्जाम्पल का क्राइटेरिया क्या है? बुलिश एग्जाम्पल का क्राइटेरिया है कि the price opens up here, I mean the price opens up here, and see, bullish में you just have to understand that it has to close above the opening price, right? It has to close above the opening price, and for this it has to close below the opening price, right? That's the only change.
राइट? तुझे ना बस इस पे ही एम्फोसाइज करना है. हमारा जितना भी मॉडल है, जितना भी कुछ है ना, सी देर आर, लाइक आई टोल्ड यू, इन 1 वीक में बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, राइट? 1 वीक में बहुत सारे कैंडल्स होते हैं, लेकिन is it necessary to trade all the candles? No, right? So suppose there are there are some aspects in which suppose देखो तो कुछ कैंडल्स में विक नहीं होती है, जैसे अपसाइड डाउन साइड. हो भाई, अगर कोई कैंडल्स में ऐसा विक्स नहीं होता है, सपोज दिस इज अ बेरिश कैंडल, इसमें कोई विक ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल ओवर the price has failed to manipulate higher, right? मतलब नॉर्मली अगर मैं तू बोलेगा कि इफ़ आई आस्क यू व्हाट डू आई मीन बाय द प्राइस नॉट failing to manipulate, because see, in a bullish scenario, right, in a bullish scenario, so suppose this is the daily candle, लोअर टाइम फ्रेम पे तो बहुत सारा नॉइज़ होगा ना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्राइस डज दिस, प्राइस डज दैट, राइट? So in this scenario, what the price does is it fails to manipulate higher. So देखो यहाँ पे क्या किया प्राइस, यहाँ पे जो प्राइस ओपन अप किया, it went down lower first, right? So what was this? This was what? This segment was what? This was manipulation. Why manipulation? Because in order to go up higher, it has to fake move, or there is different बहुत सारे डिफरेंट एब्रिविएशंस हैं, या फिर बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं बोलने की कि नीचे जाएगा मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब स्टॉप लॉसेस हंट करने या फिर कुछ भी ये वो. बट नॉर्मली तुझे बस यही समझना है कि नीचे जब भी कोई बुलिश कैंडल फॉर्म होता है तो एक मैनिपुलेशन करता है नीचे, एंड देन इट गोज अप हायर. एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ गोइंग डाउन टू टेक लिक्विडिटी, राइट? सो suppose like suppose there is a key level here. I'll just give you a example in which key levels can be many different aspects. Key level मतलब any sort of liquidity, alright? So what will the price do? The price does two different things. It will open, it will just consolidate, it will go down to this level and then distribute higher. समझ में आया? You can say that as well. So तेरे को इसमें ही ना सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. तो सपोज ये वो है, this is liquidity levels, right? So the price comes in, takes all those lows, creates a low. So we can say this as manipulation, isn't it? इसको तो हम मैनिपुलेशन बोल सकते हैं ना कि why can we see this as a manipulation? Because price has done what? The price has created a body somewhat like this. The price has created a body something like this, wherein the price manipulated at the key level and then created a high like this, isn't it?
Very easy to understand all of this. Very easy to understand. Any doubts you have? ना No, right? तो मैं उसका कहा कि अगर जिसकी वीक नहीं है तो दोबारा ऊपर जाएगा फिर वीक See, टूट भी जाएगा। देखो एक तरीके से ना ये ऐसी वाली कैंडल्स को ना डेट हैंगिंग कैंडल्स बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज ऊपर सपोज समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाली कैंडल्स, सारी जो कैंडल्स है ना, इसमें बहुत सारा लिक्विडिटी होता है, राइट? I mean, there is a lot of liquidity that are generated, and there is a very high demand in selling pressure. All right. So see, I'll just एक मेरी analogy है in which I say that suppose हमारा कोई कैंड, ये प्राइस मूव कैसे करता है? इट मूव्स एल्गोरिदमिकली, समवॉट लाइक दैट। और एल्गोरिदमिकली अगर करे तो सपोज I'll just give you a small example. It may be true, it might not be true, but I think it is something like this. So suppose there is this there is a guy, or there is an institute. So just write banks. इनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, राइट? सो सपोज इनके पास अबाउट 100 million है. If they have 100 million rupees or dollars to execute what? To execute a sell order. Do you think is it possible to execute the 100 million at one time? Forget about movies. Do you think is it possible? No, right? I think it's not possible. So देखो, I'll tell you a simple प्राइस में स्प्रेड्स होता है, राइट? स्प्रेड्स क्यों होता है? How is the spread generated? Spread is what? Spread is normally difference between difference buying and selling नहीं, there's a difference between a buying price and a selling price, right? इसको स्प्रेड्स बोलते हैं ना. तो सपोज कोई भी बंदा या फिर कोई भी बैंक्स, राइट? इफ देयर आर दिस बैंक, अगर प्राइस उसने उसको यहाँ पे 10 पे उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट? इफ ही वांट्स टू एग्जीक्यूट द प्राइस at 10, and if he uses 100 million to execute the sell order at this level 10 पे, so जब तक इसका 30 million ऑर्डर्स फिल होंगे ना, तो जो इसका आस्किंग प्राइस है वो अराउंड क्या है? इट विल कम डाउन टू 8, राइट? और जब अनदर 30 million ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो अगेन द प्राइस विल फॉल, कीप ऑन फॉलोइंग, बिकॉज everything is happening in real time, right? So it will become 6. So suppose अगर
ये बैंक्स वाले, ये सारे जो बैंक वाले जो बंदे हैं, इनको अगर ये इस प्राइस पे कंफर्टेबल है तो वो एग्जीक्यूट करेंगे ना. अगर कंफर्टेबल है ही नहीं, इतना बड़ा स्प्रेड मिल रहा है इन्हें, ये स्प्रेड इतना बड़ा मिल रहा है, तो do you think they will actually execute this at this price? No, right? They are comfortable with 8 only. They are only comfortable with 8, right? They are only comfortable with 8. So what will they do? जब इनका 30 million already execute हो गया है और इनका they will have about how much? Maybe another 30 or maybe whatever the remaining is, right? Suppose 70, right? 70. So if they are not comfortable with this number, they will wait for this, right? So once the price takes some sort of liquidity or anything as such, and the price comes back up to take this liquidity, right? And then does the usual thing. Right? Are you understanding? Normal. So जो ये 15 million का जो liquidity available था हमारे पास, this was executed at 8 at this price because they had to execute all of this. This is my analogy, okay? I mean, it may be wrong, it might not be correct, but it is a very good way to understand liquidity and market executions, or how the price moves, and how do we actually use spreads as a concept. All right. So यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था, तो इट फेल्ड टू क्रिएट अ हाई, राइट? यहाँ पे सपोज 8 पे ही उसका 30 million ऑर्डर और एग्जीक्यूट हो गया 30 पे, तो बट ही डजंट वांट टू एग्जीक्यूट द रिमेनिंग एट 6, सो दिस पीपल विल वेट for the price to come back at 8, right? These people will wait for the price to come back at 8 to execute the remaining, right? You get me? This is what it is. Are you understanding, right? समझ में आ रहा है ना? तो सी ये तो समझ आया, बट वही फिर बाद में क्योंकि वर्टिलिटी ऐसे बची ना, क्योंकि इतनी बड़ा मोस्टली आता है ये जो डेट विक कैंडल्स होते हैं ना. सो जब विक्स नहीं होता है, मोस्टली आता है लाइक टू टेक दोस सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी एंड देन गो डाउन लोअर और समथिंग. मतलब नेक्स्ट कैंडल पे Next, नहीं, it depends. It depends. Don't have an analogy that it will come or it will not come. Nothing is sure. It's just that most of the time it comes to take those sort of liquidity, but it's not instantly, but maybe something like that. Alright. So that's the case. So now if I recording में देख लेना, ठीक है? I'll just delete all of this. So now let's understand the times, okay? Time and price. Everything is based on time, okay, to be honest. Randomly the price doesn't move.
it has to be based on times. All right. So when it comes to time, there are several aspects, right? There is Asia, there is London, and there is New York, right? This is one thing. And other thing is daily. मोस्टली जापानी लेते हैं इंग्लिश. इतनी ज़रूरत नहीं है यार. I mean, it depends on what asset you are trading. I'll be explaining in terms of Nasdaq or anything as such. All right. So there is daily open. There is what? Midnight open. And if you're trading the time, we can say and then there is NY open, right? These are different opening time levels or something. So for Asia we have what is the time? It's this is right, and this is no, this is New York time. This is 9:30. क्या? वो इंडियन टाइम में है. जस्ट लीव दैट फॉर सम टाइम. मैं तेरे को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज मिडनाइट. ओके. एक घंटे बीच. अभी 1 घंटा आ गया है. दिस इज मॉर्निंग में AM, right? And this one, ये तेरे को confusing लग रहा है क्या? If it is confusing for you, I'll just कंफ्यूजिंग नहीं है, मतलब ऑब्वियसली समझ गया ये न्यूयॉर्क के टाइम के हिसाब से है 800 yeah. So मैं देखो अपने चार्ट में देख रहा हूँ. so देखो ये जो टाइमिंग्स है ना, दिस ओपन, ये मिडनाइट नहीं होके ना, I'll just write previous day. This one is midnight. This is morning. So देखो प्राइस यहाँ पे देखो. This is, I'll just show you from the daily candle. ये दिख रहा है, ये जो ओपनिंग प्राइस है ना 1800. दिस इज 1800, राइट? 1800 इज प्रीवियस डे. अगर हम इसको इट इज रात का 4:30. ओके, 4:30 इंडियन टाइम.
न्यूयॉर्क के हिसाब से 18 हो रहा है, 18 कितना होता है? PM 6 o'clock PM, ठीक है, midnight is 6 o'clock PM, alright. And then we have what? We have this 8 to previous day 8 to 11, right? This is 8 to 11 PM. Yes. Okay. And this one is 3 to 7. Yeah, 3 to 7. So it's like 1 2 3 4 candles, 1 2 3 4 candles, 4 1 hour का कैंडल्स होते हैं, ठीक है. So this is the settings. Alright, यहाँ पे just right, crazy fall आया यार, लेकिन लंदन यही करते हैं क्या ज़्यादातर? मोस्टली यू जस्ट देखो, मैं अभी तेरे को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसा क्या हो रहा है. सो देखो, दिस इज डेली कैंडल ओपन, राइट, 18. ठीक है, दिस वन इज Asia open at what time? This is 8. Closing time ये है ना, this is the closing time. 12 बजे आ रहा है। Around 12, around, yeah, 11:30, 12. Decided 12, it's fine. अभी सेटिंग तो नहीं करनी ना, अभी आपको दिखा रहा हूँ। नहीं, this is enough. And this is what, where? Pin is, sorry, right. London close will be around 7. Right. हो गया ना, समझ में आ गया. And then there is equity open. Fuck it, it's fine. Don't. What is equity open में पहली बार? Equity open है, मार्केट्स ओपन हो जाते हैं, लाइक प्री मार्केट ओपन ना, उसको प्री मार्केट ओपन बोलते हैं. लाइक इंडेसेस ओपन होता है एंड 9:30 में, लेकिन जो एक्विटी मार्केट्स होता है जैसे कि एनवीडिया, गूगल, फेसबुक वगैरह ना, नॉर्मल स्टॉक्स, वो ओपन हो जाता है 8:30 में. ठीक है, तो वही है. और दिस इज NY open. This is NY open at what? 9:30.
कहाँ कहाँ? मेरे सेशन में जो मतलब ट्रेडिंग वाले। उसको ऑफ करना ज़रूरत नहीं है। आई मीन तुझे पता है ना, वो तो वहाँ पे ही ट्रेड करना है ना हमें। देख, मैं तुझे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमें लंदन ट्रेड करना है ना, अगर हमें लंदन ट्रेड करना है, तो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट वेयर वाज द एशिया हाई लिक्विडिटी। ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं ना, डेली हाई, एशिया लो, ऑल ऑफ दिस इज व्हाट? ऑल ऑफ दिस इज, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सेशन के हिसाब से सबकी अपनी लिक्विडिटी होती है। It is time based. सबसे important liquidities are these are the levels that are very much important. Every day when you are going to trade, or if you're trying to trade a session or anything as such, you have to keep in mind all the time based liquidity that are available. ये तो सारे टाइम, ओपनिंग और क्लोजिंग हो गए। तो इसमें क्या है कि these are time based liquidity, right? So time based liquidities में क्या क्या आता है? What are the different aspects in which time based liquidity is? टाइम बेस्ड लिक्विडिटी में होता है डेली हाइज एंड लोज, राइट? डेली हाइज एंड लोज, डेली हाइज एंड लोज, वीकली हाइज एंड लोज, एंड व्हाट? यू अंडरस्टैंड नाउ? डेली हाइज एंड लोज हम कैसे मार्क करेंगे? ठीक है। डेली कैंडल्स। टाइम फ्रेम। वीकली कैंडल्स को कैसे मार्क करेंगे? वीकली के टाइम फ्रेम में। सेशन हाइज को कैसे मार्क करेंगे? विल कम बैक टू अ लोअर टाइम फ्रेम एंड देन व्हाटएवर इस टाइम पीरियड के हिसाब से जो भी हाई और लो है उसको मार्क कर देंगे। देर इज़ अ रीज़न, राइट? सी, देर इज़ अ रीज़न ना कि प्राइस यहाँ पे गया, इट टुक द डील एशिया हाई एंड देन केम डाउन लो। देर इज़ अ रीज़न, राइट? सेम वे, there is a reason why the price comes down lower to take out the Asia low and then it's going higher, something like that. So suppose if we are trading this NY open, हमारे पास दो लेवल्स और होंगे ना लिक्विडिटी के, कि हमारे पास ये है लंदन हाई, we might have this as your London low, right? London low. तो So, ये रिवर्सल्स भी मतलब ट्रीट करे जा सकते हैं। yeah, 100% we can do it, but before that we will need to understand कि हमारा बायस क्या है, राइट? हमारा बायस क्या है कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं ऊपर की तरफ या एक्सपैंड करना चाहते हैं नीचे की तरफ। अंडरस्टैंड? दिस आर द वेरी सिंपल एस्पेक्ट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बाय ट्रेडिंग के लिए तो I'll, बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। yeah, for that I'll teach you properly, ठीक से एक बार और I'll have to introduce some more concepts before that. समझ में आया? वेरी सिंपल। Now let's wait again. मैं तेरे को जस्ट वॉक थ्रू करता हूँ कल का दिन, ठीक है? सो देखो,
और हमारा यूनिवर्सल मॉडल क्या होगा पता है? द ओनली यूनिवर्सल मॉडल दैट वी विल बी फॉलोइंग इज this is the universal model that we will be following. What is this? आपने कल कहा था तो 91 मेरे लिए टर्मिनोलॉजी नहीं। Everything will be based on this only. Internal to external, external to internal. ठीक है? Either we will be going from internal to external or we are going from external to internal. Right? That's the case. So देखो, yesterday we were in what? We were in price reacted off of this fair value gap, right? This was the fair value gap. This was the bullish fair value gap. Bullish fair value gap को क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं, right? So this was the thing. So it was reacting off of this bullish fair value gap, right? And then it went and it is going towards what? It is going towards the daily high. It is going towards this high, right? This is the high, or this levels. This high is your swing high, isn't it? This is your swing high. Swing high और swing low पता है ना कैसे कैसे मार्क आउट करते हैं, कैसे वो करते हैं? देखो, swing highs और swing lows के लिए the best way to identify is, suppose we have अभी CISD मतलब मैं तेरे को नॉर्मली बताता हूँ कुछ. So देख, this is your swing low, right? This is your swing low. Why? Because यहाँ पे हमें एक रिवर्सल मिला है, right? The lows of these candles where liquidity was taken out, and then the price tried to reverse from this area, right? The price यहाँ पे open हुआ, suppose ठीक है. This is the thing. When the price opened up, ये वाली candle में the price went down, swept the low of the previous candle, and then went up higher. Same way यहाँ पे the price closed, open, price went up lower, didn't take this low because
this low was already taken out and then it went up high. Similarly, swing lows के लिए भी यही है. How do I reverse this now? So swing high के लिए भी is the same thing, alright? So see. मेरा कल का एजेंडा क्या था? My yesterday's agenda was to look for longs. I was always anticipating longs, isn't it? Because the price was expanding from this bullish for value gap. The price opened up at this level. This was what? This is 18, right? This is 18, which is the daily open, and the direction was this. So see, जब तक ना, you need to have this in your mind that if you don't have a clear bias for आज का बायस देख नहीं लिया, कल की कैंडल देखिए, राइट? yeah, previous. इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास क्लियर बायस है ही नहीं तो मैं ये डेली कैंडल के नीचे ना जाऊंगा ही नहीं. समझ में आ रहा है कि अगर मुझे हमारे पास, देखो ट्रेडिंग में ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? इट्स द डायरेक्शन, कि प्राइस जा किधर रहे, है ना? अगर हमें हमारा डेस्टिनेशन ही पता नहीं है तो हम दूसरी ट्रेन में बैठ के तो किधर किधर भी चले जाएंगे ना. सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर डायरेक्शन in order to understand कि price जा किधर है. So suppose this was the candle that we were trading yesterday, right? This one, 2nd December का. तो इसके लिए हमें क्या चीज़ें एंटिसिपेट करनी थी? हमें दो चीज़ें एंटिसिपेट करनी थी कि प्राइस कहाँ जा सकता है. तो हमारा फर्स्ट टारगेट था दिस डेली हाई, दिस डेली रेंज हाई. Daily range high, right? This was our first destination, and then our second destination was this one, isn't it? This high, this is the swing high. यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस ने क्या किया है? The price went up higher, took all of these highs and closed lower, and it didn't actually expanded higher, right? हमें ऊपर की डायरेक्शन के लिए कुछ मोमेंटम ही नहीं मिला, and that's why the price went down lower, isn't it? So in the same way that the price opened up here, we have our proper direction wherein we want to take out the daily range high and this external liquidity. So now let's understand alignment, right? This is alignment. So alignment के लिए क्या है? हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट होना चाहिए, राइट? टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे आता है? हमारा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट फॉर वीकली, फॉर 1 week, what is the alignment for week? 1 week 4H and then 15 minutes. डेली नहीं आएगा इसका 1 वीक के बाद? नहीं 1D 1H ये जो 5 minutes. एक मिनट, एक
डिलीवरी वाला समझ गया ना टाइम अलाइनमेंट क्या कैसे करना है? तो मतलब इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर तेरा की लेवल, इफ़ योर की लेवल इज, suppose if this key level, this is your weekly key level, if this is your weekly key level, the lower time frame in which you will be looking at is what? Which one will you be looking at? क्या होगा ये smaller time frame में lower time frame? This will be in 4h. You understand? और अगर 4 मतलब अगर तेरा वीकली की लेवल, मतलब सोचो कि ये वीकली की लेवल कैन बी योर weekly lows, right? If this weekly level is your weekly lows, then you will, and if you are looking for a reversal, alright, if you are looking for a reversal, this smaller time frame will be what? 4h, 4h. और सपोज अगर यहाँ पे एक हमारा शार्प टर्न मिल जाता है या फिर कुछ भी मिल जाता है, like suppose we have inversion, right? If you have an inversion, something like this, and this is in 4 hour, right? If you want to take a trade something like this, suppose इस inversion से लेना चाहता है, right? तब भी ले सकता है तू, ठीक है? या फिर तू more उसको refine करना चाहता है. If you want to refine it more, then from this you will zoom out more. You'll go to a 15-minute time frame again, ठीक है? रिफाइन करने के लिए 15-minute टाइम फ्रेम पे जाना होगा. यहाँ पे क्या है? 1 week 4 hour 15 minutes, daily 1h 5 minutes, something like that. Alright, so see, तो मतलब जो आपने अलाइनमेंट दिया है जैसे वीकली, आप वैसे बता रहे थे कि अगर वीकली करेगा तो स्विंग और डेली करेगा तो वन डे वाला और क्या करेगा तो पता something like that. So see, now we have a clear objective that this was the daily candle, right? This was the daily chart, daily high. So the price opened here, right? The price opened up here, right? So we were anticipating what? We were anticipating a bullish move towards daily high, right? We were anticipating a bullish move towards daily high, right? So now, in order to look for entries, or in order to look for any of those sort, what are we looking at now? We were looking at, this was the drawn liquidity, right? Again, this was the drawn liquidity. The price opened at this level, right? DOL इसको कहते हैं. Yes, this is your drawn liquidity. DOLing सिंपल वर्ड हो गया मतलब कि बायस देखना है. Yes, उस दिन का डायरेक्शन देख रहे हैं हम. You understand? अब समझ में आया कि हायर टाइम फ्रेम का जो कैंडल्स राइट में है क्यों इम्पोर्टेंट है. तो देखो, मंडे का चार्ट, मंडे का कैंडल देख के हम ट्यूसडे का कैंडल को ट्रेड कर रहे हैं, राइट? है ना? तो क्या हुआ है यहाँ पे? तो प्राइस ओपन, तो हम ऊपर एंटिसिपेट कर रहे हैं बुलिश, ऊपर की तरफ, राइट?
तो प्राइस ने ओपन किया, प्राइस नीचे गया पहले टू क्रिएट व्हाट, टू क्रिएट दिस वीक, right? So after that week we were looking for longs, isn't it? We were looking for longs. What is the long position that we were looking for? We will have to use this, like suppose the price opened, यहाँ पे हमारा एशिया लो था, राइट? एशिया लो इज व्हाट, इज योर टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, है ना? तो अगर हम प्राइस ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वी वांट अ स्वीप ऑफ दिस लिक्विडिटी, राइट? We want a sweep of liquidity. So from this Asia low we are anticipating what? We are anticipating a reversal, isn't it? So if we want a reversal, we will wait for this low to be taken out, and then this is in 1 hour, right? So let's go in 5 minutes, and if we go in 5 minutes, what do we see here? Do we see some sort of entry function? यहाँ पे order block, yes, इस order block पे we could have traded, most of the people have traded this one, or if you are not trading London, fuck it, not needed. So this is the daily low, और हमारा ओपन कहाँ हुआ था? हमारा ओपन हुआ था, this was the open, this was the 9:30 open, right? This was 9:30 open, and then we were anticipating higher prices, right? So we took out this low, this liquidity was taken out, and then we didn't have a proper entry function before that, but this was good enough, all right? This was good enough. You will understand all of this, एंट्री फंक्शन वगैरह, शार्प टर्न क्या होता है, रिवर्सल कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, I'll explain you in a proper way tomorrow. मैंने तेरे को कल ही बताया था नहीं कि मैं लंदन में ट्रेड नहीं करता. SMT नहीं था कल. We didn't had an SMT. I was not very much sure as well. Yeah, मैं तेरे को अभी धीरे लेमन टर्म्स में I'm just explaining you धीरे धीरे, that's why it is. But मतलब ES में ले लिया होगा, या फिर पहले ही मैनिपुलेट कर रहा है वो, लंदन आई मीन न्यूयॉर्क में वापस आएगा लेने, समथिंग लाइक दैट. It might happen. समझ में आया? That's the thing. I'll just forward you or just upload this recording somewhere, and then you can just go through again, alright? And we'll come back tomorrow again. Alright? I mean, कोई doubts है क्या आज के लिए?